Hello everyone. Hello everyone. I'm Sudipta welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. So, कौन गोटे हे जाइची? Ma'am, yesterday there was a lot of injustice happening. All the SSC teachers in this side, ma'am. Yes, बहुत सारा हेची मूवी टिके देखुथिली and obviously मोर फेवरेट नीतू मैम आदित्य सर कौन करिया एमिति होउची ताकू तो आमे किछ करि परिबानी देयर इज नथिंग इन आवर हैंड आमर बस आम कर्तव्य आमे हेले स्टूडेंट्स तो आपण मानकर कर्तव्य हेला आपण माने पढिबे आपण मानकर बेस्ट स्टडी रे फोकस करंतु आपण माने पे आमे अछु जोटा मैक्स टू मैक्स आमे करि परिबा कथा आपण पय करिवु हैला आपण ता पय ओरिएंट होंतुनी आपण ए सब भितरे पसंतुनी आपण मानक पय टीचर्स माने अछंती फाइट करिया लागि बस आपण माने आपण को पढारे केमती फोकस करिवे दैट्स अप टू यू हैला केरुवा आउ सब केमती अच्छा प्रिपरेशन कौन केमती चली पढ़ा पढ़ी ठीक ठाक करूछ या ना फिर एग्जाम कैंसिल हो गला ताकू भाभी भाभी की बस जाइछ आराम से पूरा मटन भात खाई बस जाइछ आई एम गुड सेकंड टाइम जॉइंड एक्चुअली सेठी मिस्टेक हे जाइथिला लाइक मॉर्निंग रो स्ट्रीम कीटा म पके देथले वाला क्लास दैट्स माय मिस्टेक हाँ तुम माने भी मस्त अच्छो तो ऑब्वियसली मु भी मस्त ही अच्छी स्टार्ट करिबा क्लास आ गोटे मिनिट अच्छी पिला टिके जॉइन हे संतु जुहार प्रियव्रत जुहार आज सब बैच लंचिंग रे आसीथिलो समस्त आज बैच लंचिंग रे थिलो प्रेजेंट थिलो वैलिडिटी 1 ईयर करंतु वैलिडिटी 1 ईयर ही अच्छी सब एप्लिकेशन रे जेते सब बैच हमर आसुची सबरो वैलिडिटी तो 1 ईयर ही अच्छी ना कोन प्रॉब्लम होची लाइक देखो जोटा स्पेसिफिक बैच महापैक रो ऑलरेडी अपन मान जानचोनी वैलिडिटी हमर 1 ईयर रहइबो स्पेसिफिक बैच आरआई एग्जाम सरी होला पर तार वैलिडिटी पुणी एक्सटेंड करके कोन तो माने पाइबो पीओ एग्जाम सरला पर तार एक्सटेंड करके वैलिडिटी कोन पाइबो एग्जाम तक यस सतीश भाई अच्छी सतीश भाई विल हैंडल लाइक आपण मानको हैंडल करिवे एंड तांको आपण माने ऐप विषय रे किछि पचारि परिवे सतीश भाई इज देयर ओके मैम ए आज वाईटी क्लास डिले कोन पे हैला एक्चुअली प्रकाश मो टिके मॉर्निंग वाला स्ट्रीम कीटा पके देथिली सो आपण मानको लाइव मोर शो कर नथला मोर एटा मिस्टेक थिला तो ताको पुणी कैंसिल करिकि नाइट वाला स्ट्रीम की पकेली ठीक अछि दैट्स माय मिस्टेक टीचिंग एग्जाम पाई मैथ किए पढ़ेबे टीचिंग एग्जाम पाई मैथ हमरो सर पढ़ेबे लाइक जोगेश सर पढ़ेबे मोस्ट प्रोबेबली तापर मानकु जणा पड़े ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे देखिबा बहुत गपसप हे गला सो फर्स्ट बायोलॉजी क्वेश्चंस तो फर्स्ट एटा थिला अच्छा ओके द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द सेल थ्योरी गाइस बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी मिक्स करके क्वेश्चंस म आपन मन पे आनिबी ओके दरकार पड़े हमरा बायोटेक्नोलॉजी भी देखिबा बहुत सारा लाइक साइंस एंड टेक ता रिगार्डिंग देखिबानी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स सब कुछ देखिबा ओके जोडा कि हेल्पफुल हबो तमर अपकमिंग जे कोनसे एग्जाम तमे दोछु जोथरे कि बायोलॉजी पार्ट आसीबो नो मैटर कि ओडिसा स्टेट गवर्नमेंट नै सेंट्रल गवर्नमेंट रो जेति कि एग्जामिनेशन तमे कवर अप करिवो बायोलॉजी पार्ट जोठी आपनकर मेन थिबो सेठी आपन मानकर हेल्प करिवो ओके ओके तो ऑप्शन अछि राइट आंसर आसा क्वेश्चन ऊपर गाइस आसी जाओ So the cell theory was given by का द्वारा मते कहिलो the Sklenden and Swan or Watson and Crick को अपन माने रिलेट कहा सहित करि परिबे ना मैम से डीएनए रा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देइथिले हां कि नाही
डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ताको आम एलिमिनेट करि परिबा रॉबर्ट हुक को आम क्या सहित रिलेट करिया मते कुह वाटसन एंड क्रिक को रिलेट कले रॉबर्ट हुक को आम क्या विषय रिलेट करिया ना हेरेडिटी एट ए मॉलिक्यूलर लेवल ले भी जदि आम माइक्रोस्कोपिक लेवल को जिबा सेइथरे भी आम देखि परिया कोन हेरेडिटरी ट्रांसफर अछि तो हेरेडिटी को आम क्या सहित चूज करिबा ना मैम रॉबर्ट हुक हुक फॉर हेरेडिटी एच फॉर हुक एच फॉर हेरेडिटी जते पारुछ रिलेट करिके मने रखो किछि भी करिके देन विर्चों को आम क्या सहित रिलेट करिया मते कुह आम रिलेट करि परिबा विर्चों को क्या सहित हमर सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स जे कोन से सेल हैला गोटे आम जदि कोन देखुछे गोटे ऑफस्प्रिंग रो सेल को आम कंसीडर करजे सपोज मोर हैला आपनकर हैला सेल को आम कंसीडर करूछे त निहाती से हम एंसेस्टर टाइम रो आसीची हमर पेरेंट्स टू आसीची पेरेंट्स को कहा टू आसीची ना पेरेंट्स को आसीची तांकर पेरेंट्स को सो एमिति हम जदि टाइम गैप रे देखि देखि जिबा तो एटा जे कोनसी ना गोटे सेल रु ट्रांसफर हेई हमर आसी जोथरे कि हमर कोन डीएनए मैच कर तो हमें कहि परिबा ए जो विर्चो कोन करिथिले ना फॉर्म करिथिले दैट ही एडेड इन हिज बुक दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स arising from free existing cells clear तो राइट आंसर कौन हबो ना स्क्लेंडेन एंड स्वान करिथिले स्क्लेंडेन एंड स्वान करिथिले केबे करिथिले ना ऑलमोस्ट 18s रे करिथिले हम कहि देबा 1839 आई थिंक 1839 एग्जैक्ट ईयर टा या फिर अपन माने 80s मेंशन करि परिबे 80s रे हमर कोन करथले दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ व्हाट ना सेल्स जे कोनोसी प्लांट हैला या फिर एनिमल हैला हम ताऊ कहि परिबा दे आर मेड अप ऑफ व्हाट ना मेड अप ऑफ सेल्स प्रणाम ओके सो हम कहि परिबा दिस वन इज एंड आल्सो हमर स्क्लेंडेन एंड स्वान laid the foundation of what na modern biology जदि who laid the foundation stone of modern biology ताहाले भी हमें रिलेट करि परिबा काहू ना ए दी जण तो हमें कोन कहि परिबा ना modern biology relatable with him is that clear तो या विषय रे देखो तो कोन कहछि principles of cell theory ना all living organisms are composed of one that is one हेले unicellular हबो मोर हेले मल्टीसेलुलर हबो दैट मींस जे कोनोसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आसिला से माने कंपोज हेकी थांती आइदर वन सेलुलर और दे आर मल्टीसेलुलर सो नेक्स्ट ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एटी कोन कहला व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एटा क्वेश्चन आपन मनकर आसीबो एते जाय क्लास चलीबो कोन हैला कलिंगो काई कांदु जाजी तमे कोन देया पिला कांदु छ कोन आजी को ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ द structural organization of an organization what the structural this one is the structural organization of an organisms कहि परिबा most of the question यहाँ पर तम मानकर कोन आसीबो ना मैम what is the basic unit of life then your answer should be the cell is the basic unit of life सर पीयू बैच परचेज करबा को पड़िबो कि बैच तो परचेज करिया को पड़िबो ना कारण एठु हमकु बेसिक सिखेबी बेसिक एडी सिखेबी बट पूरा अपन माने को बेस स्ट्रांग करे परिबेनी ओके तो चलो नेक्स्ट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल जेमते अपन माने कहली जे कोन से सेल याकु किए करथिले एबे ही जस्ट कहथिली अपन माने रिलेट करि परिबे का किए करथिले ना हमर फर्स्ट हम रिलेट करि परिबा विर्चो करथिले के करथिले ना विर्चो करथिले लेटर ऑन हमें देखिबा कोन ना सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स हिंस not derived from the spontaneous generation suppose all of sudden आम generation नु आउट generation को सेल पड़िसला आम पूर्व generation में सेल नथिला एमिति हुइनी सो बेसिकली जे कोनोसी हमर ह्यूमन बीइंग प्लांट हैला या फिर एनिमल हैला लाइफ जेबेटु स्टार्ट हिची सेबेटु हमर सेल ही अछि एंड सेल ठ हमर कोन आगो को लाइफ स्पीड बढ़ि चलिछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय देखो सेल टर्म ताको के बाहर करथिले सेल जो टर्म ता अछि ताकू की हमर बाहर करथले क्वेश्चन इज दैट सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑलरेडी मु त मानु कहि देछि सेल टर्म ताकू के बाहर करथले जदि आपण माने लिवन हकू चूज करिवे ताले लिविंग सेल दैट मींस हमर कोन लिविंग सेल को के बाहर करथले द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम आल्सो कहा को चले लिवन हकू फादर ऑफ व्हाट ना माइक्रोबायोलॉजी
एंड ये कौन डिस्कवर करथिले ना फास्ट डिस्कवर करिथिले लिविंग सेल क्लियर सो राइट आंसर कौन होबो केबे करिथिले कहले 16 रे करथिले 1674 ऑलमोस्ट ओके सो रॉबर्ट हुक को हमें कौन कहि परिबा ना रिलेट करि परिबा राइट आंसर कि नहीं वेरी गुड सो रॉबर्ट हुक करथिले रॉबर्ट हुक कौन करथिले ना ऑब्जर्व द कॉर्क सेल माने अछि कॉर्क सेल थ्योरी ता अकॉर्डिंग से ऑब्जर्व करथिले कोन यस ता अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करथिले द फास्ट से सेल ता केबे करथिले ऑलमोस्ट हमर 1665 रे 1665 रे से सेल करथिले एंड ये फास्ट हमर कोन सेल आसीतिला ता पर लिविंग सेल आसला 1674 रे 1674 रे हमर कोन लिविंग सेल आसीतिला देन रॉबर्ट ब्राउन को हमें रिलेट करि परिबा कि रॉबर्ट ब्राउन को हमें रिलेट करि परिबा कहा सहित ना न्यूक्लियस सहित हमर देखो केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस इज डिफरेंट ता सहित रिलेट करिवनी बट रॉबर्ट ब्राउन सहित आपण माने रिलेट करिवे कोन ना न्यूक्लियस सहित तांको आपण माने केबे ना 1831 रे न्यूक्लियस को डिस्कवर करथिले के ना रॉबर्ट ब्राउन सेम हमर स्वान ऑलरेडी आपण माने कहि देछि कोन सेल थ्योरी यांको रिलेट करिवे का सहित ना सेल थ्योरी नॉट ओनली को-फाउंडर हमें कहि परिबा ओके को-फाउंडर कहि परिबा चलो नेक्स्ट तो सेल रो हिस्ट्री टिके देखि दियो कोन अछि आपण मान को पाइटे आनि छी सो हुक इज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट coined the term cell in the 1616s he observed the cork form a tree stem they reminded him of the rooms monks lived in so Sclandon looked at the plant cells and Swan looked at the हमर कोन ना एनिमल सेल सो हम कहि परिबा बेसिकली सेल के बाहर करले ना रॉबर्ट हुक बाहर करले सेल देन हमर कोन सेल थ्योरी के बाहर करले ना एई दी जण हमर बोटनिस्ट मिसी के बाहर करले क्लियर चलो नेक्स्ट so which organelle is called the powerhouse of the cell important one जीके क्लास होनी के आजी राका थंबनेल कोन अछि बेटा कोन अछि ऑब्वियसली आपण मानकर मेंशन अछि ना कि बायोलॉजी बोली ताहले आपण माने एक्सपेक्ट काई करूचंदी कि जीके क्लास चलीबो आपण माने टिके रूटीन को देखि देबे चेक कर देबे सॉरी फॉर दैट कि मु आपनकर रूटीन आज जानि पालिनी इट्स माय मिस्टेक तो आपण माने जानि देबे होल प्रोसीजर कोन अछि ओके केउ टाइम रे कोन क्लास रहउचे आपण मानकर YouTube क्लास बेसिकली तो राइट आंसर मते दियो which organelle is called the powerhouse of the cell obviously एटा तो समस्त जानिछो समस्त आर्ट साइंस समस्त सब पिला जानिछंती हमर कोन हमर पावर हाउस ऑफ द सेल कहले हम काहा को चूज करछु ना माइटोकॉन्ड्रिया कहउचे दैट इज हमें कहि परिबा द साइट ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन ओके एंड ये कौन प्रोड्यूस करे ना मैम ये प्रोड्यूस करे एटीपी व्हाट प्रोड्यूसेस इट ना प्रोड्यूसेस द एटीपी क्लियर इज दैट क्लियर राका कौन हैला सब नाजुक छुआडा टिके कोन कहितले कांदी पकोछ अरे अरे रुमाल टिके पोछुछि रो रुमाल पठोछ हैला तो न्यूक्लियस को हमें कोन रिलेट करि परिबा ना न्यूक्लियस रा काम कोन रुहे मते कहलो ना स्टोर्स करे कोन ना डीएनए को एंड हमर टोटल सेल फंक्शन को कंट्रोल करे के ना हमर फास्ट लिखि दियो स्टोर्स डीएनए एंड टोटल सेल को फंक्शन सेल रा फंक्शन को कंट्रोल करे के ना न्यूक्लियस then Golgi body important one Golgi body रा कौन काम रहिबो ओके ओके मु सार कहि देबी सर मे भी भूली जाइछ ओके ना के नथिले चित्तरंजन 1600 सेंचुरी रे हमर के नथिले ओके सेति पई सब फॉरेन रो साइंटिस्ट माने फॉरेन रो जूलॉजिस्ट फॉरेन रो बॉटनिस्ट से माने सब डेवलप करूथि चल सो गोल्गी बॉडी को हमें कहा साथ रिलेट करि परिबा मैम से पैकेज करे जदी पैकेज ऑफ हमें कहि परिबा पैकेज एंड सीक्रेट्स द प्रोटीन्स पैकेज करे कोन पैकेज एंड सीक्रेट्स कहा को ना प्रोटीन को किए करे ना गोल्गी बॉडी ओके सो राइबोसोम्स को हमें रिलेट करि परिबा का सहित राइबोसोम्स को हम कहि परिबा कि सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करे कि ना राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस तो सी why mitochondria is called the powerhouse of the cell this is the description that आपण मानको पीडीएफ में प्रोवाइड करी
they generate the energy rich molecule, that is ATP, from cellular respiration, which is later used for other processes. Hence the mitochondria are called as the what? Now the powerhouse of the cell. What is ATP? That is the adenosine triphosphate. Clear? Chalo next. कोठी किछि डाउट हेले गाइस डू आस्क. ओके, नेक्स्ट को DNA is mainly present in, मते तो DNA हमर कोठी मेनली प्रेजेंट रहउछि. DNA को कैरी किए करूछि, DNA को कैरी किए करूछि. ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. राइबोसोम करूछि, माइटोकॉन्ड्रिया करूछि, न्यूक्लियस करूछि या फिर गोल्गी एपेरेटस करूछि. किए करूछि? माइटोकॉन्ड्रिया करूछि. माइटोकॉन्ड्रिया रो ओन DNA अछि. एटा इन जनरल पचारिला. गाइस माइटोकॉन्ड्रिया नो, माइटोकॉन्ड्रिया को जीवनी केते बेले हला माइटोकॉन्ड्रिया रो ओन DNA. तापर भी क्वेश्चन आसीबो व्हिच ऑर्गेनिज्म हैविंग इट्स ओन DNA, दैट इज ओनली माइटोकॉन्ड्रिया. Okay, mitochondria contains हमें कहि परिबा दैट्स ओन DNA like important for the energy metabolism. But the right answer will be what? Na the nucleus. But na nucleus हमें तब कहि परिबा the houses of the chromatin and controls the heredity through what? Na nucleus. So DNA को के carry करे? Na nucleus. Clear? Is that clear? Very good. So Golgi apparatus already अपन मानु कहि देछि कोन हमरो पैकेज करे, प्रोटीन को प्रोसेस करे, ता सहित रिलेट करिवो. राइबोसोम को कंटेन्स ये कोन राइबोसोम हमर कोन कंटेन करे ना rRNA. दैट मींस द राइबोसोमल RNA. rRNA को कोन कैरी करे. नेक्स्ट देखो कोन अछि ना फास्ट न्यूक्लियस हमको केमिति न्यूक्लियस भीतर हमर DNA कोठी रखुछि. सो बेसिकली हमर एटा होछि ओटे सेल, ता भीतर हमर कोन होछि ना दिस पोर्शन इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भीतर देखो एटा को जूम करिके ता स्ट्रक्चर दे देछि. दिस इज द DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. देन कोटे फ्रैगमेंट को एटे जूम करिके आपन को देखैछि. दिस इज द कोन डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट. The unit of heredity is, tell me the unit of heredity को हमें कौन कहूँ? Options are in front of you. That is gene, that is chromosome, that is protein, or that is DNA. What will be? कौन अच्छी ना unit? Unit को हमें कौन कहूँ? The unit of heredity. But a single unit को नहीं क्या हमें कौन कहूँ? Very good, very good. ता कौन कहूँ हमें? ना मैम ता को हमें gene कहूँ. ता को कौन कहूँ? ना gene कहूँ. That's what? Now, gene is the code for the proteins or the trait. This is the codes for protein or traits. Clear? Chromosome को हमें कौन कहि परिबा? Ma'am, this is the structure carrying many genes. हमें कहि परिबा कि chromosomes is the structure that carries many genes. Protein का को कहि परिबा? ना ma'am, this is the final product of the gene expression. प्रोटीन कौन हमर फाइनली जीन एक्सप्रेशन होला पर सेथुर प्रोटीन रिलीज हुए. हमें कहि परिबा दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. डीएनए ऑलरेडी त माने जानि छ दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी. हमें कहि परिबा का पुना डीएनए को कहि परिबा दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी एंड द जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट्स इनसाइड द डीएनए. क्लियर? चलो नेक्स्ट या विषय टिक अछि कोन देखो. व्हाट इज जीन्स? व्हाट इज जीन्स? ना जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी as I have said you. So they contain the hereditary information encoded in their chemical structure for transmission from generation to generation. So through हमें कौन कहि परिबा ना ए जीन ही जी के हमरा कैरी करे को नेक्स्ट जनरेशन को. ओके, muscle mass growth protein. ओके, सो जीन्स कौन करे ना कैरी करे. आपण माने कहिथिबे ना मोर जीन टिके अधिक, मो बापांकर जीन टिके मो पाखु को अधिक आसी जायछि. सो मो टिके मो बापांग भले देखिबा को किछि कैरेक्टर टिके मो बापांग भले सेम आसी जाउछि. कहूछि ना कहूनी. सो एई सब जिंसटा हमें कोथु जानुछे, कॉपी कोथु करूछे ना. ऑब्वियसली बापांग सहित जीन मैच करूछु. जदि अधिक अमाउंट रो जीन हम बापांग भले आसी छ, हम बापांग भले बिहेव करूछे. जदि मांको भले जीन हमको एक्सप्रेस होइछ अधिक, हम मांको भले बिहेव करूछे. या फिर हमें बाय द आउटर अपीयरेंस हमें कहि परिबा हम हम बापा मांग भले देखाउछि. या फिर जे बापा या फिर मैटरनल हम जदि तांको सहित रिलेट करबा एंसेस्टर सहित मैटरनल हैला कि पैटर्नल हैला तांको सहित रिलेट करछे. सो जीन ता बेसिकली कोन ना हमर हेरिडिटी जोटा कि ट्रांसफर करूछि थ्रू दिस जीन. क्लियर? चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट देखो द ऑर्गेनेल रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. द ऑर्गेनेल रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस हमें ताको कोन कहउछे मते कुआ. Options are in front of you. That is ribosome, lysosome, Golgi complex or chloroplast. Lysosome सब बेले मन रखिबो से हमरा जेते वेस्ट मटेरियल रहिछि, जेते वेस्ट मटेरियल रहिछि ताकू कोन डाइजेस्ट करूछि.
ताकू कोन डाइजेस्ट करूची एंड वी कैन से दैट इज द टोटल जते ऑर्गेनेल्स अछि ताकू ओन आउट भी के करूची ना लाइसोसोम करूची गोल्गी कॉम्प्लेक्स सहित ताकू कोन मॉडिफाई करूची गोल्गी apparatus सहित रिलेट कर दबो गोल्गी वर्ड आसला माने गोल्गी कॉम्प्लेक्स गोल्गी apparatus ता सहित समान कर दो हैला ये से सुइसाइडल बैग भी हमरा वेरी गुड ताकू लाइसोसोम को भी खुआसे ओके सेम गोल्गी apparatus को हमें कहि परिबा कोन पोस्ट ऑफिस जदी पचारिला पोस्ट ऑफिस पचारिला हमें सॉरी गोल्गी apparatus को कहि परिबा जे कि कोन फुल पैकेज करे देन हमर कोन नेक्स्ट प्रोटीन को रिलीज करे बार भी से हेल्प करे तो राइट आंसर कोन हबो ना मैम राइबोसोम हबो राइबोसोम्स हबो दिस इज द साइट ऑफ कोन ट्रांसलेशन जो थरे कि प्रोड्यूस हुए कोन ना प्रोटीन प्रोड्यूस हुए so the organelle responsible for the protein synthesis is directly kono ribosomes okay very good so see so the organelles involved in the protein synthesis kon rahuchi these are the parts total amar kono cell bhitare this is the nucleus part then varieties this is the mitochondria so variety organelles amar achi tar function bhi achi okay this is the picture bas tamane mind re set kariki rakho ki total cell ko function karuchi that through that protein synthesis hochi amar kono this is the main thing next chalo which organelle is called the suicidal bag very good आसीगला again एबे ही जस्ट कहितली suicidal bag विषय कहलो टिके कहा को हम राइट आंसर करूछे suicidal bag which organelle is called the suicidal bag that is the Golgi apparatus कहितली कोन पोस्ट ऑफिस से रिलेट कर दबो हैला लाइसोसोम राइबोसोम वैक्यूल राइबोसोम तो एबे जस्ट करला ताकू तो माने करिवोनी सो वैक्यूल लाइसोसोम वैक्यूल बेसन दा आसीनी लाइसोसोम को राइट आंसर चूज करियो यस लाइसोसोम कोन ना कंटेन्स करूची द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जे कोन ए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कोथरे हेल्प करे ना डाइजेस्ट करिबारे जेतिक सेल मटेरियल अछि ताकू डाइजेस्ट करिबारे हेल्प करे कि ना एई हमर लाइसोसोम क्लियर तार रोल कोन होची ना मेनली मेंटेन करूची कोन ना सेल्युलर क्लीनिंग मेंटेनेंस तार कोन रहबो बॉडी भीतर ना सेल्युलर क्लीनिंग करछि कि ना एई हमर कोन ना लाइसोसोम क्लियर दैट कॉजेस व्हाट ना आफ्टर हमर सेल्युलर क्लीनिंग जो होची दैट कॉजेस द ऑटोलिसिस व्हेन नीडेड जते बेले हमर नीड हबो बॉडी भीतर ताकू डायरेक्ट ऑटोलिसिस करिवो ओके जो हमर स्मूथली फंक्शन होची हां सब क्लास आसीबो गायत्री ओके तो आमे ताको डायरेक्टली रिलेट करि परिबा बाकी वैक्यूल सहित आपण माने ये वाटर स्टोर करिक रखे ताको ओनली रिलेट करिवो कि स्टोर वाटर न्यूट्रिएंट वेस्ट ए सब को स्टोर करिक के रखे ना वैक्यूल कहा को ना वाटर को करे स्टोर्स वाटर न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट्स ए सब को वैक्यूल स्टोर करिक रखे सी the lysosome ro outer layer तार structure रही किछि ए टाइप रो yes biology आराई छो so membrane that is the lipid layer okay this is the basic part and तार different layers अछि so hydrolytic enzyme mixture देखि परिबो membrane transport proteins एगुडा को बुझे पई त मु टिके बेसिक क्लास करिया को पड़िबो अदर से क्वेश्चन माने वर्ड उडा तम मुंडरे बाउंस हे जिवो बेसिक जोटा एग्जाम रे आसीबो वन डे एग्जामिनेशन ता पई ही मु क्वेश्चन आनी छी तो ऊपर जाओ ट्राई करूची जेति के तमानू देखै परिया कथा देखै हैला हां फील्ड वेरिफिकेशन रे गले एटा काम रे आसीबो देखो द 70s द वर्ड मन रखो 70s राइबोसोम इज फाउंड इन द 70s राइबोसोम इज फाउंड वेयर टेल मी वेयर इट इज फाउंड prokaryotic cell eukaryotic cell viruses or the both A and B जानि छी जोठे बोथ थिबो संगे संगे सेठी पळेबो तम मानकर आंसर तुका मास्टर yes mostly कोठी ना prokaryotes रे देखिया को मिले this is the site of protein synthesis in the bacteria but हमर ए जो 70s राइबोसोम ता कोन होची 70s राइबोसोम रो वर्क कोन करची ना हमर बैक्टीरिया रे प्रोटीन सिंथेसिस करूची कि ना 70s राइबोसोम तो एटा हमर डेफिनेटली यूकैरियोटिक रे देखिया मिलिबनी ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स रे जदी या बदले 80s पचारि थांता 70s बदले जदी 80s पचारि थांता ताले 80s मोस्टली हमें कहि परिबा द राइबोसोम सुधरे कोन यूकैरियोटिक से रिलेट करि परिबा
मोस्टली 80s राइबोसोम हमर कोन यूकैरियोटिक सहित रिलेट कर परिया बट 70s कहला जते बेले कोन ना माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को मिसी के हमर आई थिंक 40 30 रे 70s रे हमर कोन राइबोसोम टा डिवाइड हे जाय आपण मानको एग्जांपल में देखेबी इमेज अछि ओके ना यार डिस्क्रिप्शन आई थिंक थिला यस सो एटा टिके देखि दियो सो ए 70s राइबोसोम इज अ टाइप ऑफ राइबोसोम क्लियरली आ गुटे मेंशन करो देखो फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल bacteria and archaea and in the mitochondria and chloroplast of eukaryotic कोटी नंबर eukaryotic रे ही देखिबा को मिले it composed of two subunits कोन रहउची गोटे 50 रहउची गोटे 30 रहउची that is the 50 30 रहउची and 70s रे कोन कहउची एटा subunit तो S in the 70s refers to the said work units that measures of sedimentation rate in the centrifuge which is related to the size and shape of the ribosome. So basically 70s रे आपण माने ताको 40 30 रे कंपोज करि परिबे डिवाइड करि परिबे जदि 80s हला ताको 50 and 30 रे करि परिबे एटा मिस्टेकली 50 and 30 दे ओके चलो नेक्स्ट who discovered the nucleus so nucleus को के डिस्कवर करिथिले मते कहिलो क्लास को टिके लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो एटा मते कहिया को पड़ियो तमन को बार बार काहे की आर्ट्स बैकग्राउंड रो पिला मुंड ऊपरे बाउंस करी जाउची मैडम कोन कर परिबा को जदि खाली घोसै देबी सपोज हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस गाइस डिस्कवर्ड की करले न्यूक्लियस मारी चलो रॉबर्ट ब्राउन एमिति करी करी गले तमे आंसर मन रखि दबो मु डिस्क्रिप्शन दोउची सेति पई तमरा बाउंस होची कि डिस्क्रिप्शन देले मैम टिके बेसी डिफिकल्ट लागुची जदि एई टाइप रो क्वेश्चन आसिला के डिस्कवर न्यूक्लियस के डिस्कवर करथिले के प्लांट मैम फर्स्ट बॉटनी के डिस्कवर करथिले हु इज द फादर ऑफ बॉटनी हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी हु इज द फादर ऑफ सेल एई सब हेले तमन को मजा लागिवो जमा डिफिकल्ट लागिवनी से आर्ट्स रो हो साइंस रो हो कॉमर्स रो हो ना नहीं को मते हां आज लाइक करिया को भूली जाय सब क्लास को गोटे मिनिट नै कि सब लाइक करो क्लास को तब क्लास देखो ओके सो हमें कोन कहि परिबा सो 1831 ने रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करथिले कहा को ना न्यूक्लियस को डिस्कवर करथिले रॉबर्ट हुक सहित आपण रिलेट ऑलरेडी करछ कहा को ना सेल को हम रिलेट करि छे सेल को रिलेट करि छे डार्विन सहित कहा को ना इवोल्यूशनरी थ्योरी हो अधिक डिस्क्रिप्शन देबी ने तमाने को माइंड रे हमर कोन बाउंस हे जाउची डिस्क्रिप्शन अछि तमाने चेक कर दो मु क्वेश्चन आंसर करके जाउछी हला तो को श्वान सहित ऑलरेडी को फाउंडर कहिथिली को फाउंडर रिलेट कर दबो ये भी हमर कोन सेल थ्योरी ये सेल सहित पड़बे रॉबर्ट हुक सेल थ्योरी पळे आसीले स्वान पळे आसीबे हला चलो नेक्स्ट तो फास्ट देखि परिबो दिस इज ना आ देखेबिनी इमेज अछि आपण माने नीचे चेक करिवे ओके नो मैम एमिति प्लीज करंतुनी मजा करि सको सो द सेंट्रल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिस इज व्हाट ना हमरो कंसीडर करिबा हमें कहा को ना ऑब्वियसली मैम न्यूक्लियस को करिबा न्यूक्लियस हमर कोन सेंट्रल पार्ट रे रहिला दिस इज द पोर्शन जोटा कि टोटल सेल को हमें कंसीडर करछे हमर सेंटर रे के रहउची ना न्यूक्लियस रहउची ओके ना टोटल हमर कोन न्यूक्लियस रहउची त मझी रे हमर कोन पोर्शन रहउची न्यूक्लियस देन ता चारि पटे पुनी न्यूक्लियर एनवलप रहउची क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म सो डिफरेंट मटेरियल्स अछि यू कैन हैव अ लुक हियर ओके चलो नेक्स्ट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट मते कोइ परिबो दिस इज द थिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट मेनली कोथरे है ना टोटल इटा उटे फ्लूइड स्ट्रक्चर तो मेनली कंपोज्ड ऑफ हेइ थाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ताको देखैबी इमेज रे सेटा मेनली कोन थाय कोन ऑप्शन सब सी एसिलानी लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को आसिला प्रोटीन तो निहाती दरकार प्रोटीन तो लिपिड सहित प्रोटीन निहाती दरकार कान उठला दिन जदि बायोलॉजी कोठी केतेबेले सुनी देइथो हमर कोन दरकार ना मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमर सब बेले लिपिड सहित प्रोटीन सुनिथिबा लिपिड सहित कार्बोहाइड्रेट्स के सुनिछो वर्ड त माने सुनिछो हां कोटा हबो ना प्रोटीन एंड लिपिड सब लिपिड सहित सब बेले ता संग ता बेस्ट फ्रेंड की ना प्रोटीन हमर रहिबो मन रखिता सो दिस इज द फ्लूइड हमें कहि परिबे दैट इज द मोजाइक मॉडल एंड दिस इज द फॉस्फोलिपिड कोन बाइलेयर एंड हमें कहि परिबे दिस इज द प्रोटीन ऑफ okay the bilayer and the protein and lipid was on the best friend clear चलो लिपि को देखि कि इसी कर देला कोन भाई लिपि के आगो लिपि देखाला आगो प्रोटीन देखाला नहीं चलो कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल भी बिल्कुल भूल से चूज करिबा नहीं कारण कार्ब्स आर कोन द माइनर कोन ग्लाइकोप्रोटीन्स हम कहि परिबा दिस आर द माइनर ग्लाइकोप्रोटीन्स सो ग्लाइकोप्रोटीन्स हमर मेजर दरकार माइनर ग्लाइकोप्रोटीन्स दरकार नहीं तो हमें डायरेक्टली कोन प्रोटीन सहित ही जीवा चलो नेक्स्ट
सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो टोटल अपर लेयर स्ट्रक्चर होची गोटा को जदी आपण माने सेल को माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो टोटल गोटा को जदी आपण माने माइक्रोस्कोपिक व्यू रे देखिबे तार स्ट्रक्चर टिके ए टाइप रे रहची बट हम भीतर सेल सहित लाइक अछि चलो नेक्स्ट which process requires energy that is the ATP for transport across the cell membrane tell me अमानिया बाख रुचिस्मिता कैलोस एल्क्रोस रंगीला ढोका सिकुन यस सब बढ़िया आंसर दो चलो कौन हबो ना प्रोसेस रिक्वायरिंग फॉर द एनर्जी लाइक इन द फॉर्म ऑफ एटीपी देन हमें कौन कहूचे ना मैम ताको हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहूचे कौन कहूचे ताको एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्जेक्टली द मूव्स द सब्सटेंस अगेंस्ट द कौन ग्रेडिएंट अगेंस्ट द सब्सटेंस मूव करे हमें ताको कौन कहूचे ना मैम हमें ताको कहूचे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोली कहूचे तार रोल कौन रहउची ना ये एब्जॉर्ब करूची जते मिनरल्स अछि थ्रू द रूट थ्रू रे हमर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉडल ले कौन होची ना सब मिनरल को एब्जॉर्ब करूची का को नहीं परिबा सब सोडियम को नहीं परिबा पोटेशियम को नहीं परिबा सो एगो सब को कौन मिनरल्स को से प्लांट एब्जॉर्ब करूची क्लियर डिफ्यूजन सेटा पैसिव हे जिवो एटीपी एथरे बाहर नी ऑस्मोसिस भी हमर कौन पैसिव वाटर मूवमेंट हे जिवो एंड प्लाज्मोलिसिस लिसिटा पैसिव दे भी हमर कौन पैसिव होबो तीनटा जाक हमर पैसिव होबो ये गोटे ही होबो कौन एक्टिव पैसिव रे कौन हुई ना से श्रिंकेज करे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जानि थिबो अपर लेयर रु लोअर लेयर को आसे लोअर लेयर रु अपर लेयर को जाए ओके ऑस्मोसिस डिफ्यूजन चलो नेक्स्ट देखो सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे हमें कौन रिलेट कर परिबा दिस इज द हाई कंसेंट ग्रेडिएंट देन दिस इज द लो कंसेंट ग्रेडिएंट सो जेनुइनली हमरा कौन हाई कंसेंट ग्रेडिएंट रु लो कंसेंट ग्रेडिएंट को जाए इन द फॉर्म ऑफ व्हाट एटीपी रिलीज करे क्लियर चलो नेक्स्ट cell wall in plant cell is made up of mate ko cell wall in plant cell is made up of what okay cell wall is made up of what cell wall in plant cell is made up of protein starch cellulose or chitin स्टार्च रो काम कोन ना हमर फूड को रिजर्व करी रखिबो कोन करिवो ना मैम ये रिजर्व करी के काहा को रखुची ना फूड को रिजर्व करी के रखुची देन हमें कहां से रिलेट करि परिबा मते को ना मैम ऑब्वियसली सेल्युलोज हबो दैट इज द स्ट्रक्चरल सेल्युलोज ही हबो दैट इज द स्ट्रक्चरल हमें कहि परिबा दैट इज द पॉलीसैकेराइड गिव्स द रिजिडिटी व्हाट ना स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड दैट गिव्स द रिजिडिटी टू द सेल इज दैट क्लियर सॉरी मैम क्लास नहीं ओके चलो सो चिटिन को अपन रिलेट कर परिबे कोन ना हमर सॉरी यस चिटिन सहित स्टार्च सहित रिलेट करला रिजर्व करी फूड रखे बट चिटिन सहित हम करि परिबा हमर जेन्युइनली चिटिन देखिबा को मिलेबो कोठी फंजी एंड हमर कोन आर्थ्रोपोड्स ए माने गठे हमर कोन चिटिन देखिबा को मिलिबो ओके ये की प्रोवाइड करे कोन ना गोटे सपोर्ट एंड बस्टिंग रु प्रिवेंट करिवो का को ना हमर फंजी को चलो नेक्स्ट तो सेल वॉल रो टोटल स्टार्टिंग हमर सेल्युलोज को टाइप रे रहिबो माइक्रोफाइबर रहिबो देन मिडल लैमेला कोठी रहउची पेक्टिन कहउची दिस इज द स्ट्रक्चर जस्ट जो माने बायोलॉजी बैकग्राउंड रो से माने को जानिबा कोटा हेल्प करिवो ओके नेक्स्ट देखो द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल इज important टेल मी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट फोटोसिंथेसिस हमर कोन रहउची मते को राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी what will be the right answer the site of photosynthesis हमें कहा को कहबा कोठी हुए obviously due to the presence of chloroplast हमर कोन photosynthesis process हेई पारे अन क्लोरोप्लास्ट कोठी रुहे प्लांट रो को पार्ट रे रुहे ना मैम हमर लीफ रे रुहे कारण या पई ही तो ग्रीन कलर आसे okay so हम कहि परिबा this contains the chlorophyll converts the light into what light into food and as a byproduct हमर कोन ना ऑक्सीजन रिलीज हे जाय गोल्गी बॉडी सहित आपण माने कोन रिलेट करि परिबे ना मैम सिक्रीशन को हम रिलेट करि परिबा राइबोसोम सहित कोन ऑब्वियसली राइबोसोम आसला माने कोन ना प्रोटीन सिंथेसिस को रिलेट करिबा ओके देन जदि हमर माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी आपण जानि सन्ती कोन रेस्पिरेशन रे हेल्प करे विथ द पावर हाउस ऑफ द सेल बट मोस्टली तार फंक्शन पचरिले दिस इज द रेस्पिरेशन okay and Golgi body this is the excretion okay
चलो नेक्स्ट. So this is the photosynthesis process. You can have a look at the first step. The plant draws off the water and minerals from the ground through the root. So basically, by the presence of sunlight, photosynthesis process like occur due to the presence of chlorophyll pigment in the leaf part of the plant. Okay. Chalo next. Cristae are found in cristae gote part. Okay. सेटा गोटे आमर कौन थाए जोटा कि मेनली प्लांट रे हेला एनिमल्स रे हेला मेनली आमर कौन एनिमल्स को आपण माने कंसीडर करंतु. तो एनिमल्स होता कहता मते कुह राइट आंसर कौन हबो. राइबोसोम्स रे कौन क्रिस्टी अछंती की. नो मैम. राइबोसोम्स रे आमर कौन देयर इज नो क्रिस्टी. ओनली क्रिस्टीज आर फाउंड इन वेयर ना माइटोकॉन्ड्रिया. तो द इनर मेम्ब्रेन द फोल्ड आमे कोन कहि परिबा तेजे आमे क्रिस्टी देखिया पास. ता रोल कौन ना से इंक्रीज करे द सरफेस एरिया for ATP production. माइटोकॉन्ड्रिया रे काम कोन रहिला ना माइटोकॉन्ड्रिया हमर ATP दैट इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को से कोन फॉर्म करे. सो ए ATP को फॉर्म करिया रे नै गोटे फास्ट गोटे हमें कोन कहि परिबा गोटे लार्जर सरफेस एरिया को इंक्रीज करके किए दिए ना दैट इज क्रिस्टी दिए. क्लियर. देखो तो एई भीतर लेयर हमें कहि परिबा. देखो माइटोकॉन्ड्रिया रे स्ट्रक्चर होउची. सो ए जो लेयर होउची अपन माने केमति जिगजैग स्ट्रक्चर कहूची. सो ये जिगजैग फॉर्म करके हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को एनलार्ज किए करूची ना ये क्रिस्टी करूची. दीज आर कॉल्ड एज व्हाट ना क्रिस्टी पार्ट. ओके नेक्स्ट चलो. हु फास्ट ऑब्जर्व द लिविंग सेल्स. टेल मी हु फास्ट ऑब्जर्व द लिविंग सेल. लिविंग सेल को फास्ट किए ऑब्जर्व करथिले. एटी सब राति रे गपसप करिया को आसीचो. औ तो व्हाट्सएप एते पिलांक कांटेक्ट रखि पारुना. ग्रुप तो फॉर्म करि पारुना. गोटे क्लास आमर अच्छी मैम तो रात 11 जाए क्लास करेंगे एठी सांग साथी करके गपी देला टाइम पास ना कि ग्रुप गोटे बने दे दउची त माने पूरा ओपन ग्रुप हैला. आ क्लास काई करियो त माने से ग्रुप रे जाओ सब गप. जो माने क्लास करजो सिंसियरली से माने रुह. बाकी जो माने गपसप करियो से माने प्लीज टिके क्लास रू लेफ्ट हे जाओ. मु त माने पे गोटे ग्रुप बने देबी सेठी भरपूर गपिबो हैला. किछि गसिप रही जाइथियो मते पचारियो. मु त माने पूरा मसाला दे टॉपिक देबी ता ऊपर ही गपि ना ना सेमिति ही दरकार. मु देखुनी ऑलरेडी क्लास 40 मिनिट हला स्टार्ट हलानी. मु त माने को देखुची ना त माने कोन करूछ. हां बा गपि गपि पढिबा. एग्जाम तो सरी जाईची. एग्जाम तो कैंसिल हे जाईची. एटा ही त टाइम मैम हमें गपि गपि पढिबा. एते सीरियस बारे कोन अछि. आसु जते एग्जाम आसले त 5 दिन पूर्व आपण पुनी मैराथन पर मैराथन आनी आमे पुनी सीरियस हे जीवो ना कि से दरकार. आउ कोन दरकार एई त जीवन ना हैला. तो को हु फास्ट ऑब्जर्व द लिविंग सेल. लिविंग सेल किए फास्ट ऑब्जर्व करथिले मते टे को. फास्ट लिविंग सेल की ऑब्जर्व करथिले. यस मैम के करथिले ना एंटन वे ल्यूनॉक. ओके हमें कहा कहिबा ना ल्यूनॉक फास्ट करथिले. केबे करथिले ना मैम 1674 रे करथिले. 1674 रे करथिले. ओके सो ऑब्जर्व द प्रोटोजोआ बैक्टीरिया रे फास्ट हमर कोन ना लिविंग सेल कोठी करथिले. जदि क्वेश्चन आसीबो कोठी करथिले फास्ट लिविंग सेल डिस्कवर करथिले. बट कोठी को एनिमल रे करथिले ना प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया. क्लियर. इज दैट क्लियर. वेरी गुड. ऑलरेडी आपण माने रॉबर्ट हुक जानि संती न्यूक्लियस डिस्कवरी करथिले. रॉबर्ट हुक सहित आपण माने कोन करि परिबे ना हमर कॉर्क सेल सहित डिस्कवर करि परिबे. ऑब्जर्व द डेड कॉर्क सेल. ओके नेक्स्ट देखो स्वान तो ऑलरेडी को-फाउंडर आपण करि परिबे सेल थ्योरी. चलो नेक्स्ट. So Leeuwenhoek, the first person to observe the living cells, was a Dutch trader named the Anton van Leeuwenhoek. 1673, Leeuwenhoek observed the protist. Okay, so next. Which is absent in the prokaryotic cell? That means there is a two types of cell. Basically, कोटे हला eukaryotic cell, next होची prokaryotic cell. So prokaryotic cell ले कोटा present अच्छी. अच्छा सॉरी prokaryotic cell ले कोटा absent अच्छी जोटा कि eukaryotic cell obviously present थिबो आ कोन. So absent कोटा अच्छी भितरु मते कुह. Plasma membrane, ribosome, nucleus और DNA. नाई नाई शांतनु से तम पई वेट करथिले. तमे केबे गोटे यूनिसेक्स पार्लर खुलिबो तापर सेठी जाई कि से हेयर कट करबे. बुझिलो पैसा नथला तांग पाखरे ना. यस यस राइट आंसर कोन हबो. ऑब्वियसली न्यूक्लियस.
obviously nucleus will be the right answer. There is no true nucleus in the prokaryotic cell. Prokaryotic cell ले गोटे true nucleus हमें पाई परिबा नहीं. That is only nucleoid. Okay, कौन थाए ना nucleoid हमें पाई परिबा. Clear? Next चलो. बाकी डीएनए जानी छो प्रेजेंट हमर कोन बोथ रे थाए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ रे थाए. राइबोसोम में हमर बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक रे थाए. So this is the difference between the prokaryotic cell and eukaryotic cell. Just have a look and अपन मान पीडीएफ मिली जिवो या को टिके थरोली पढी दबो कारण बेसिकली प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल ले जोटी भी बायोलॉजी ऑप्शन आसुची कोटे क्वेश्चन आसबेटा निहाती दरकार. मेनली कोटा कोटी प्रेजेंट थाए कोटा एब्सेंट. क्लियर? चलो. The cell organelle responsible for the secretion and packaging is. So cell organelle जोटा responsible कोथि पई ना हमरा secretion पई हैला या फिर packaging. Packaging आसिला माने क्वेश्चन तो माने कोन कहा को आंसर करिवो. पोस्ट ऑफिस कोन कहितली. पोस्ट ऑफिस that is the middle source protein हमें कहि परिबा. कोन कहि परिबा. Yes, so this is the Golgi apparatus कहबा. कोन कहूचे Golgi apparatus. Lysosome कोउथरे हेल्प करूची ना मैम आपण ही कहितले lysosome हमर हेल्प करे कोउथरे ना डाइजेशन रे हेल्प करे. Yes, yes, GS studies, general studies हमर कोन तार अंडर ही हमर बायोलॉजी क्वेश्चन आसुची. So vacuole that is for the storage, ribosome that is for the protein synthesis. Clear? चलो next. So this is the process this is the photo हमें कहि परिबा cell organelles कोठी कोन पार्ट रहउची mainly हमर Golgi apparatus कोठी रहउची. This is the structure of Golgi apparatus in the cell. Okay, cell भितरे कोन कोन nucleolus कोठी present रहउची. Then this is the vacuole जोथरे हमर कोन ना हमर store हेकी सब जिंस रहउची. Then cytoplasm these are the हमर rest part जोटा रहि गला ताका हमें cytoplasm रे consider करूचे. Now this is the all. Okay, basically you can have a look. हाँ रिसर्च चलिए. तो कुआ the liquid part of cytoplasm is called liquid part of cytoplasm. देखो एठी cytoplasm तो मानु कोठी कोइ ए जोटा हमर टिके हमर लाइट येलो कलर yolk कलर तो मानु देखा जाउथो स्क्रीन रे. से yolk कलर पर्सन भीतर जोटा अछि सेटा हमें कोन कहउछि ना दिस इज द व्हाट ना cytoplasm. So cytoplasm ता हमर मेनली कोथरे कंसिस्ट हे कि थाए मते कुआ. Cytoplasms are mainly consist of what? Like liquid part of the cytoplasm is called what? Is called not consist of but is called what? जो water part of cytoplasm अछि ताकू हमें जनरली कोन कहउचे. जनरली हमें ताकू cytosol कहउचे. The solution part cyto part. So cytoplasm सहित रिलेट हे परिबो cytosol. यदि protoplasm कहबा ताहले हमें कोन कहबा ना whole living content को हमें कोन कहउचे ना this is the protoplasm. sap हमें कोन कहउचे ना this is the fluid inside the vacuole. देखो एठी इमेज रे vacuole ए जो हमर अछि जोथरे कि स्टोर हे कि रुहे. तो ता भीतर जो फ्लूइड ता अछि ताको हमें कोन कहउचे ना मैम ताको हमें sap कहउचे. sac नुह sap. ओके sap कहउचे. क्लियर? यस यस. सो न्यूक्लियोप्लाज्म ऑलरेडी तमन जानछो जोटा हमर को लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस आसले को न्यूक्लियोप्लाज्म कहिबो. साइटोप्लाज्म आसले साइटोसॉल कहिबो. क्लियर? वैक्यूल आसले हमर को sap कहिबो. रिलेटेबल करि परिबो तो प्रोटोप्लास्ट आसले प्रोटोप्लाज्म पळे आसीबो. क्लियर? वेरी गुड. नेक्स्ट चलो. So cytoplasm mainly कौन अछि? This is in eukaryotic cells the cytoplasm consists of the contents inside the plasma membrane except for the nucleus. So nucleus को छाडिला परे जति के portion हमर रही गला green जोटा light green देखा जाउची these are the process of cytoplasm. Clear? चलो next चलो. The double membrane organelles are what? Tell me. That is the chloroplast and mitochondria, ribosomes and lysosomes, or that is Golgi and ribosome, or vacuole and lysosome. कहा सहित रिलेट करियो मते कुह. कहा सहित रिलेट करिबा हमें कुह. ए बी बिता सुची कोन हेची सुशांत बी कहीं आसला ribosomes and lysosomes आसुची. This is the non-membranous हमें कहि परिबा. That is the non-membranous and single membranous कहिले हमें consider करि परिबा का ribosomes and lysosomes को. Double membrane कहिले हमें का गुना chloroplast and mitochondria को relate करिबा. Even Golgi and ribosome ताकू भी हमें single रे consider करिबा. Even vacuole and lysosome ताकू मध्य single रे consider करिबा. Clear? देखो तो mitochondria रो own थाए ribosome हमें कहि परिबा mitochondria रो own थाए.
बाकी ताकू छाड़ले हमर बॉडी भीतर केमती थाए देखो माइटोकॉन्ड्रिया रे कोन एठी अछि देखो सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया रे एठी तमे देखि परिबो आउटर मेम्ब्रेन देखो आउटर मेम्ब्रेन गोटे हमर क्लोरोप्लास्ट जदि कंसीडर करछे देखो एठी गोटे आउटर मेम्ब्रेन भी अछि एठी गोटे इनर मेम्ब्रेन भी अछि ना नहीं बट व्हेयर एज गोटे इनर मेम्ब्रेन कोठी नाही माइटोकॉन्ड्रिया रे अछि जोटा कि इलास्टिक करूची सेल को एनलार्ज करिवारे हेल्प करूची दिस इज द only cell membrane only the inner membrane there is no outer membrane so to dita कोठी ना only chloroplast present अछि okay चलो next spindle fibers are formed during cell division by को मते spindle fibers are formed during the cell division by राइबोसोम्स लाइसोसोम्स सेंट्रियोल्स और गोल्गी बॉडी स्पिंडल फाइबर सहित हमें कहा को रिलेट करि पाइबा राइबोसोम को तो हमें करिबानी ऑलरेडी त मानु कहि जे प्रोटीन सिंथेसिस सहित रिलेट करबा लाइसोसोम को तो कहिबनी ताको ऑलरेडी को डाइजेशन करे ओनली हम ताको कहि परबा लाइसोसोम को ताको छाडी दियो बाकी कोटा हबो यस दैट इज द सेंट्रियोल्स कोन क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर्स यदि क्वेश्चन जेते बेले आसिला ताको रिलेट करिवो कहा सहित ना सेंट्रियोल सहित मैम करिवो दैट इज ऑर्गेनाइज करके रखे हमर का स्पिंडल ड्यूरिंग कोडी ना हमर माइटोसिस फेज रे तबे एनिमल सेल रे जेरा फेज आसे मेयोसिस माइटोसिस सो माइटोसिस रे हमर स्पिंडल फाइबर गुडा कोन ट्राई करंती सेपरेट हेबा को ताको जॉइन करिकि ताको कनेक्ट करि के रखे ना मैम ए सेंट्रियोल्स कनेक्ट करके रखे सी तो ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर उडा सेपरेट होंती तो तांको कनेक्ट करके किए रखे किए कनेक्ट करके रखे ना मैम ए सेंट्रियोल्स माने कनेक्ट करके ताको रखंती ओके चलो नेक्स्ट ड्यूरिंग माइटोसिस आसीगला क्वेश्चन ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल इन क्रोमोसोम्स माइटोसिस हमर का प्रोसेस परे क्रोमोसोम्स कोठी विजिबल हैला को केस रे हमें कहि परिबा विजिबल हैला देखो मेटाफेज रे एनाफेज रे प्रोफेज रे और टेलोफेज रे कोठी हमर आसी के विजिबल हैला हमें कहि परिबा ड्यूरिंग द माइटोसिस व्हाट विल बी द राइट आंसर क्रोमोसोम्स कोठी आसी के विजिबल हैला मेटाफेज रे नाही ऑलरेडी हमर मेटाफेज रे कंडेंस हे कि थाए अलाइन हे कि थाए ओके एनाफेज रे सेपरेट होंती हमर कोन एनाफेज रे हमें प्रोफेज रे कहि परिबा फर्स्ट विजिबल कोठी हुए प्रोफेज रे सी फर्स्ट विजिबल हुए प्रोफेज रे देन हमें कहि परिबा प्रोफेज रे विजिबल है कि हमें कहि परिबा कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट हुए कोठी ना प्रोफेज रे स्टार्ट हुए तापर हमें कोन एनाफेज फर्स्ट आसीबो तापर प्रोफेज तापर मेटाफेज तापर टेलोफेज ए टाइप रे आसीबो टेलोफेज रे तो क्रोमोसोम्स पूरा डीकंडेंस्ड हे जानती ओके यस मु देछि आंसर धारा मारी की मु देछि आंसर ना मौसमी तो बोधे बीएड पिला तमे तो ये क्लास भी करूछो ना तमे तो जानि थियो भी से ओके सो डीएनए रेप्लिकेशन स्टेप वाइज हमर केमिति हुए ना क्रोमोसोम्स हमर सिंपली कोठी देखा जाए ना हमर प्रोफेज स्टेज रे ओके चलो की भी कटाला क्वेश्चन तो क्रॉसिंग ओवर ऑकर सीन क्रॉसिंग ओवर कोठी देखा जाए मते को क्रॉसिंग ओवर्स मिठी बच्ची तमे जूलॉजी पिला अरे वाह तो को मते क्रॉसिंग ओवर ऑकर सीन को पीरियड हमर क्रॉसिंग ओवर हे जाए तो को मते माइटोसिस प्रोफेज मेयोसिस 1 प्रोफेज मेयोसिस 2 एनाफेज और साइटोकाइनेसिस कोठी हुए मते को व्हाट विल बी द राइट आंसर बाघ एटा भलो क्वेश्चन ना एटा विकटाला क्वेश्चन कहला डी कोन आंसर आसलानी डी साइटोकाइनेसिस फेज जेतेले पळे आसीबो सेतेबेले आपनकर साइटोप्लाज्म डिवीजन हुए दिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ओके तो मेयोसिस 2 एनाफेज को हमें कंसीडर करि परिबा द क्रोमाटिड सेपरेट होंती एथि मेयोसिस 2 रे क्रोमाटिड माने सेपरेट होंती ओके मेयोसिस 1 प्रोफेज रे कोन हुए ना हमरा पाइसिटिन माने कोन ना अलग होंती सेपरेट होंती पाइसिटिन एंड ए केस रे कोन जेते पाइसिटिन सेपरेट होंती हमें कहि परिबा दिस इज द फेज ऑफ व्हाट ना क्रॉसिंग ओवर फी ओके माइटोसिस प्रोफेज तो हमर क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल हे ही न था ओके देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर
एक्चुअली केते दिन हम साइंस पढ़ी सब विकटाला लागुच हाँ हाँ बाघ मु पूरा बुझी पारछु तम इमोशन डोंट वरी तो देखो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मेयोसिस को फेज रे हुए ना फास्ट क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन ने कोठी हुए ना द होमोलोगस पेयर मूव क्लोज टुगेदर द क्रोमैटिड्स मे एक्सचेंज द जीन सो इथे कोन से माने क्लोजली पाखा पाखी पूरा आसी जाउचंती देन से माने कोन से जीन एक्सचेंज करियो देयर इज अ हाई चांस देन नेक्स्ट फेज रे कोन हुए ना ऑर्गन सेपरेट होंती सपोज आपण मानकर कोन अछि एठी दीटा फेज अछि दीटा फेज अछि देन नेक्स्ट फेज को जतबेले से माने चेंज करंती कोन करंती ना ए टाइप रे होंती सपोज यस हाफ हाफ पूरा मिसा मिसी हेकी आसंती ए समय इस पर्सन ग्रीन एटा गुरे एमती करि परिबो माने कलर तमान को बुझोची कि केमिति से माने मिक्स होंती क्रॉसिंग ओवर होंती सो क्रॉसिंग ओवर कोन ना हमर ड्यूरिंग द मेयोसिस ता पीरियड ता ओवर हैला परे ही हमर हेई थाए so fast cell division कोठ हुए and that is the homologous pair of replicated chromosomes separate हेई जानती जो माने homologous pair थिबे से माने फास्ट सेपरेट हेई जिबे देन heterologous ता रहि जिबे देन सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट तापर सिस्टर क्रोमैटिड माने सब धीरे धीरे की सेपरेट हेबे एरा बहुत डिटेल आपण मानू देखिया को पड़िबो ओके एमिति ओवरऑली मु त मानकू कहि पारिबी नाही चलो नेक्स्ट रियाज कमान यार हमें पाठ पढुचे in no more slangs class रे slangs नहीं in which phase of cell cycle DNA replication occurs so in which phase of cell cycle DNA sorry in the which phase of cell cycle the DNA replication occurs DNA replication occurs से कोठी मते कुआ राइट आंसर कौन हबो कुआ मैम टिके खान सान का स्टाइल रे पढंतु कि कहा स्टाइल रे केमिति पढाई परियो मते कुआ मु तो मो स्टाइल रे ही पढेबी ना खान सान का स्टाइल रे पढियार अछि त हमें बेस रु पढिया को पड़िबो ओके से जेंति ब्लड माने क्लास करूसंती सेल ऊपर स्टार्टिंग रु क्लास करूसंती टिश्यू ऊपर करूसंती तो एई सब जानिया को हेला हमको बेस क्लास करिया पड़िबो एमसीक्यूज क्लास रे खान सार भी अछि तो मान को पढाई परिबे नाही ए तो माने गोटे घंटा रे पांचटा क्वेश्चन जदी पढिया को राजी अछो पुनी परे कमेंट सेक्शन में कहबनी कि मैम गोटे घंटा रे मात्र पांचटा क्वेश्चन करले देन म आपन को बहुत डिटेल रे बहुत थोरोली जी1 फेज कोठी आसे एस फेज कोठी आसे एम फेज कोठी आसे मेटा फेज रु पुनी प्रो फेज को केमिति आसे सब डिटेल रे बुझि पाए मैम ए क्वेश्चन कोठु आनुसन सब तम सिलेबस रे अछि गाइस सब तम सिलेबस चल चल तो कोठी हबो यस मैम दैट इज इन एस फेज रे हबो द डीएनए सिंथेसिस हमर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट ए सब कोठी हुए ना एस फेज रे हुए जी1 फेज रे ओनली ग्रोथ जी फॉर ग्रोथ सो ग्रोथ फेज ओनली कोटा में कहि परिबा ग्रोथ फेज ओनली जी1 फेज एस फेज रे कोन हुए ना डीएनए सिंथेसिस हुए ओके आउ कोन हमें कहि परिबा ता सहित क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हुए कोट एस फेज रे जी2 फेज सहित हमें का को रिलेट करि परिबा जी2 फेज सहित कोन ना से प्रिपरेशन करे फॉर द माइटोसिस फेज को नेक्स्ट जीबा पई सेटा कोन ना जी2 फेज रे करे जी2 फेज रे करे एम फेज सहित हमें रिलेट कहा करि परिबा ना सेल डिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट माने रखो एम डिवीजन एम माने एम रो त माने मन रखि दे मदर एम सहित मेटाफेज करनी एम रु मदर मन रखि दियो सो मदर कोन करिवो सब बेले सेल डिवीजन करे सो मदर करिवो एम फेज सहित कोन ना सेल डिवीजन करे इज दैट क्लियर ऑब्वियसली डीएनए सिंथेसिस एठी भी हुए मेटाफेज रे भी हुए एस फेज रे भी हुए ओके चलो द सेल साइकिल टेल मी द सेल साइकिल अच्छा सॉरी এটা তার প্রসিডিউরটা গাইস these are the different types of phase the g1 phase s phase g2 phase and m phase रे different type of phase suppose pro हमर कोन प्रो फेज रहिला प्रो मेटा फेज ओनली रहिला एनाफेज टेलोफेज साइटोकाइनेसिस these are all the meta m phase हमर माइटोसिस फेज अंडर एटा आसीबो बाकी g2 g1 and s phase कोन अछि देखि दब ओके नेक्स्ट वाला which is called the kitchen of the cell हमें कहा को कहि परिबा को मते which is called the kitchen of the cell गोधी 2.0 अरे वाह गोधी आ ना पाइलनी जो माने सब निज नारे न आसिकी
नाम ना रे सब आसुचो मु से माने पे गोटे ना देबी से माने नेक्स्ट क्लास रे सेही ना रे सब हैला ओके व्हिच इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल कहा को कहबा मते को ऑब्वियसली कहा को कहबा किचन ऑफ द सेल that is what na chloroplast ताको हमें chloroplast को कहबा that is makes the food through the photosynthesis that is chloroplast so kitchen of the cell हमें chloroplast को कहबा mitochondria powerhouse of the cell mitochondria कहबा ribosome से protein synthesis रे help करे nucleus the control center हैला nucleus clear next देखो so chloroplast is a plastid containing green pigment called the chlorophyll this pigment helps the cell to prepare its own food by the process of photosynthesis. So that's why chloroplast is the cell organelle which is known as the kitchen of the cell. Clear? चलो हाँ अच्छा मु तम ना चेंज करती तमे सार क्लास रे अमानिया बाघरे आसी हैला मो क्लास रे आसी तो which of the following has its own DNA and ribosomes which of the following has its own मु कहन छी स्टार्टिंग रु own DNA ता पाखरे अछि own ribosome ता पाखरे अछि किए हबो obviously मैम किए ना that is the semi autonomous body function system ता कर कोन ना semi autonomous रुहे and produces what na proteins for the respiration that is mitochondria obviously okay चलो next already ribosome कहन छी कोथरे हेल्प करे ना मैम प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करे ribosome and RNA protein कॉम्प्लेक्स सहित रिलेट करि परिबो लाइसोसोम हम कहि परिबे डाइजेस्टिव एंजाइम कहि परिबा ओके नेक्स्ट गोल्गी apparatus सहित भी आपण माने ऑलरेडी पैकेज पई जानि छथि तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल ता विषय टिके डिटेल अछि दीटा लाइन ताकु टिके चेक करियो नेक्स्ट चलो हां शायरी करो करो लास्ट को पढी भी करो शायरी तो which cell organelle is responsible for intracellular digestion so intracellular digestion टाइम को सेल organelle responsible होते टिके कहिलो काहा को हमें कहि परिबा ऑप्शंस कोन अछि राइबोसोम लाइसोसोम गोल्गी बॉडी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो डेफिनेटली हबनी से तो पावर हाउस तो गोल्गी बॉडी भी हबनी से तो पैकेज करे ताकू भी छाडी दियो ऑप्शन कोन होची राइबोसोम एंड लाइसोसोम दीटा अछि राइबोसोम ऑलरेडी अपन मान जानछन को प्रोटीन सिंथेसिस रे बट डाइजेशन सहित मो लाइसोसोम को बार कहिची लाइसोसोम सहित रिलेट करिवो कोन ना कंटेन्स द hydrolytic contains the hydrolytic enzymes and a hydrolytic enzymes कौन करे ना digestion रे help करे hydrolytic enzymes and ये कौन कोथरे help करे ना हमर digestion रे help करे is that clear चलो next so this is the cell organelle तार structure and functions with the diagram mention अछि plant cell and animal cell ताकु टिके चेक करि दबो okay next देखो the structural and functional unit of life already starting ru कहिथिली कि क्वेश्चन जदि आसीबो एटा डेफिनेटली आसीबो कि structural functional unit of life हमें कहा को कहिबा तो कहा को कहिबा मते को organ कोन देछि ना मैम organ तो कोन ना made up of tissues organ को हमें कोन कहि परिबा ना these are made of tissues clear then tissues को कोन कहिबा now these are made of cells then by cell को कौन कहिबा now this is the basic unit of life okay basic unit of life is cell then chromosome that is the unit of heredity this is what now shortcut रे ताकू मने रखो which is called as the unit of heredity that is chromosome unit of heredity is that clear हाँ जेते हेले आम मैम ना मते घर को नहीं जाओ कहीं छाड़ी चलो नेक्स्ट सो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज व्हाट ना मैम झियो मानकर बायोलॉजी इंग्लिश भल हुए ना मु देखी मैक्सिमम मैम माने ही बायो आ इंग्लिश पढ़ाती हाँ यही देख कही मैक्सिमम मैम माने बायो को मु कंसीडर करी इंग्लिश कही पिंकू सर कान रे कथा पकेबी काली क्लास पे रेडी हेगी था हैला रेडी हेगी था so cell is the fundamental unit of life so what is the fundamental unit of life you can give the answer as a cell is the fundamental unit of life okay so all the living organisms are made up of what
made up of cell. एठी दीटा क्वेश्चन आसी वाला. It is a structural and functional unit of life. Which is called as the structural and functional unit of life. ताहाले ଆମେ right answer देई परिबा कि that is also cell. So these are the basic thing जोटा कि आपण माने चूज करिवे right answer टिके पढिबे. So the cell is a Latin word. कोठु आसी जे ना little room. Okay. चलो किए वापस करले रबर टू 1665. Which one is a non-membranous organelle? कहा को हमें कहि परिबा non-membranous organelle? को सरीगला क्लास सरीगला लास्ट को टिके रुह गपिबा एबे क्लास मझिरे गपसप कर हैला हां कि जहा हो सब भाई माने केते भलो सब राखी आसुची सब भाई माने टिके आसी जे मु राखी बांधी समस्त गटी हैला चलो so which one is a non membranous organelle कहा को हमें कहि परिबा this is a non membranous organelle that means that doesn't have any membrane so कहा को कहि परिबा माइटोकॉन्ड्रिया को कोन कहि परिबा कि माइटोकॉन्ड्रिया तो मुझे माने पिक्चर रे देखैतिली माइटोकॉन्ड्रिया कोन अछि ना डबल मेम्ब्रेन अछि माइटोकॉन्ड्रिया has the double membrane inner membrane outer membrane mu देखैतिली so nucleus that is also double membrane chloroplast that's also double membrane so ribosome का हमें कोन कहि परिबा the made up of what na RNA and protein there is no else membrane मो जेबिनी हमर राखी बंदा नाही गोटे गोटे घर को जाई राखी बांधबी रुआ so organelles कोन कहबा organelles are the tiny organs of the cell nucleus nucleolus ribosomes vesicles so एई उडा हमर बेसिक पार्ट रहइबो कार ना organelle okay चलो the longest phase of cell cycle is so longest phase of cell cycle हमें कहा को कहउचे को phase रा को हमें कहउचे this is the longest phase of the cell cycle what is the prophase metaphase interphase or telophase what will be the right answer कोटा रहइबो सबुटु longest मते कहिलो टिके देखो कोन पछाची longest phase of the cell cycle पछाची जदी longest meiotic stage पछारी थांता जदी longest meiotic cell पछारीला meiotic stage पछारला ताहाले आपण माने प्रोफेज को राइट आंसर देबे meiotic phase रो longest stage रहउची कोन ना प्रोफेज बट जदी एठी पछाची कोन longest phase टोटल सेल साइकिल ऊपर पछार देची longest phase ताहाले हमें इंटरफेज को चूज करिबा सो 90% ऑफ द साइकिल जोटा कि G1 S G2 ऑलरेडी कहितली दैट इज द इंटरफेज कोदरे G1 G2 एंड S बाकी किछि पर्सन देखैतिली जोटा हमर एन पेज रे रहि जाउतला हमर कोन माइटोसिस पेज रे रहि जाउतला सेथि हमर कोन ए जोटा टेलोफेज देला मेटाफेज देला प्रोफेज देला एना सब ता अंडर को पडुछ क्लियर इज दैट क्लियर तो देखि परिबो एठी माने देखि दियो ओके सेल साइकिल कोन रहउची ना G1 दैट इज सेल ग्रोथ रहउची डीएनए सिंथेसिस G2 मोर ग्रोथ रहउची प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस तो ए G2 G1 S रे ही हमर 90% ही कंप्लीट हे जाउची रेस्ट रह जाउची केते ना इंटरफेज रहउची बहुत कम जोटा माइटोसिस रे कोन आसुची ना प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज एई सब हमर आसी जाउची कोथरे ना माइटोसिस रे देखि परिबो माइटोसिस रे केति की रहउची ओनली एति की पोर्शन ओनली माइटोसिस बाकी सब G1 G2 S रे ही कंप्लीट हे जाउची ओके ओके मिताली बाबुदला 29 पर पुणे 30 थिबो ना मु जानछि माने केते पर्यंत भाबिबार मु जानछि खणा हेरा हबनी हमर काई हबनी गोटे फास्ट क्लास रे त माने हब न हब भाबि देलणी के कोन कहउछ देखुआ मैम आउ टिके पढांदो क्वेश्चन सरीगला क्वेश्चन कोठु आनी पढेबी को मते आ कोन जानिबा को छ त माने कहूना कोडा जानिबा को अछि मैम सेल कोठु स्टार्ट हे जी कोन जानिबो मते कहूना म ता विषय आउ टिके 10 मिनिट कॉपी देबी को मैम 25 क्वेश्चन प्लास्टिक्स होई परिबन ना
25 plastids आस्तिला कोठू own DNA and ribosome कहार ना only mitochondria have its own DNA and ribosomes. No, there is no options to choose the plastids. मैम आपण कौन खाई चंदी मु कौन खाई थी मु कौन खाई थी तो इवनिंग रे ही कौन ऑफिस रे खाई के आस्तिली तापरे आ कौन खाई सी मन नहीं ऑफिस रे आज वाओ मोमो रो सब मोमो मगा हितला मोमोस खाइछु गोटे डिटेल क्लास आनंतु एमसीक्यू रे किछि बुझी होउनी हाउ ताकू टिके केमिति फॉर्म चेंज करबी सेटा को ट्राई करू ओके तो माने क्लास रे प्रेजेंट रहिबो आज तो 100 ऊपर को पिला जाइना क्लास रे प्रेजेंट रहिले त मु आनी भी फंडामेंटल क्लास नॉल फ्री क्लास रे त माने को बेसिक रो केते बुझै पारी मते कहूना एप्लीकेशन रे क्लास मैक्सिमम और 1.5 घंटा रो 2 घंटा अछि सार माने मोमो खाउचंदी सार माने मोमो पागल लाइक पिंकू सर आज पूरा कहिले कि पिंकू सांकर एंड मोर चिकन मोमो आसीथिला बाकी जोगेश सर चंदन सर एंड कोन हमरो कंप्यूटर सर थिले तांकर सब वेज मोमो आसीथिला मिक्स टॉपिक रु रुह प्लीज कौन कौच रे किछि पढ़ पानी मैं मिक्स्ड आनंतु गोटे टॉपिक रु अच्छा मिक्स टॉपिक गोटे विवेक आनिबा ना मु एक्चुअली स्टार्टिंग रु करिथिल ना सो स्टार्टिंग रु भाबली सेल ऊपर किछि क्वेश्चन आनिबा तापर ब्लड ऊपर किछि आनिबा एमति बेसिक रु टिके टिके जिबा से हमर स्टार्ट हेछि कोन सेल तो सेल रु ही स्टार्ट करिबा ना मैम सब्सक्राइब न कले कमेंट देई परिबनी कि ना सब्सक्राइब न कले कमेंट काई दबनी कमेंट दबो बट तुम माने सब्सक्राइब काई करिवनी को मु राती 11 रे तुम माने को कष्ट करी पढौची तुम माने सब्सक्राइब भी करिवनी एया तुम मो भीतर रिलेशन सीरियसली मन दुख कर देला ओके ओके पीडीएफ मिलिनी काली रो प्रत्युष तुम आउ थरे चेक करो पीडीएफ मु देइची 50 एमसीक्यूज लिखा हेछि पीडीएफ मु शेयर करिछि लाइक की अछि के अमित हमर टेलीग्राम ग्रुप रे पीडीएफ शेयर हेछि ना सतीश भाई आर यू देयर टेलीग्राम ग्रुप रे हमर पीडीएफ शेयर हेछि 50 एमसीक्यूज लिखा हेछि लास्ट क्लास एंड आज सकाळ रो क्लास रो पीडीएफ मु सेठी मर्ज करिके देइछि बेसिक रु ही तो क्लास आणुछि बेसिक रु आउ केते बेसिक रसे एमसीक्यूज क्लास न करी थ्योरी क्लास YouTube रे करी हबो नाही दिस इज आवर लाइक कोन आउट ऑफ द प्रोटोकॉल थैंक यू एवरीवन गुड नाइट मोर फेवरेट सब्जेक्ट कहिबी तो माने हसिबा कोन कहिबी मोर एक्चुअली रे फेवरेट सब्जेक्ट हला इंग्लिश बट बाय डिफॉल्ट इंग्लिश केबे पढिनी नेइनी आ ओके सब्सक्राइब न कले कमेंट देई परिबेनी मिताली मु जानिनी से विषय रे सब्सक्राइब जदी न कले कमेंट देई हबनी आई सीरियसली डोंट नो अबाउट दैट आरडी यूनिवर्सिटी रे जय जगन्नाथ प्रभु आरडी यूनिवर्सिटी रे मैम गोटे इंग्लिश क्लास आनंतु पिंकू सर मोर कतल कर देबे इंग्लिश क्लास मु एते भी जानिनी रे त मानकर क्लास नेला बेले मु जानिनी त माने तो फेवरेट सब्जेक्ट पचल तो काहा को कोन पढिया को भल लागे मते इंग्लिश पढिया को भल लागे कथि लागे तम माने मोर चाकरी गोल करेबो पिंकू सर मते काढी देबे चल तू बाहर वेदांग रु तू जा स्टडी आई को पुणी ए सब होवनी चलो चलो बाय बाय हैव ए गुड डे टेक केयर ओके पिंकू सर साइंस पढ़ेबे ओके 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 चलो आ राती रे कॉमेडी करन चलो बाय बाय गुड नाइट एवरीवन